Yes, good afternoon all of you. So we will wait for a minute. So meanwhile, let me finish the attendance part. Yes, scan this QR code for the attendance. Is my voice is audible to all of you? Yes. Is I'm audible? Yes, sir. Yes. Okay. Is the screen is visible to all of you? Yes. Yes, sir. Yeah, respond someone. Yes, sir. Visual. Sir. Yes. फिर से बोले एक बार, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है. Is I'm audible? Yes, sir. Okay. So let us start without wasting any time. So today we'll finish that part, okay? The CPU suggest of the CPU scheduling. So as the timetable is rescheduled, okay, so I thought we will get one more class. So that two more algorithms are there that we will try to finish. So what we'll do, so we will try to finish in the first, we'll complete the class part, okay? So first we'll discuss that one, then I will show how to implement that. Okay, so if I'm right, we are completed up to priority scheduling, है कि नहीं? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से हम लोग कर लिए थे. यस. Yes, sir. सो नाउ गोइंग टू फर्स्ट इंप्लीमेंट द राउंड रॉबिन. ठीक है, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, राउंड रॉबिन. सो वी विल इंप्लीमेंट दिस एल्गोरिथम, देन वी सी द रेस्ट टू मोर एल्गोरिथम. ओके, राइट. राउंड रॉबिन. So I hope all of you are sitting with the laptop because you have to implement the program. Okay. So let me take the same example. So there is three process. Suppose I am saying process. This is my process P1, process P2, and process P3. And we are assuming the burst time. Okay, so what is the burst time? Burst times are 24. Okay, now I'm suppose we are assuming the time quantum is given. Time quantum is given 4. Fine. So
can anyone explain what is the concept of time complexity? Sorry, what is the concept of round robin? How we are implementing? Yes. We will provide time quantum to each of the process. Yeah, we will. Yes. We will provide quantum to each process. After that, completing the time quantum, we send it to the waiting queue, and the next process will get the time quantum, and that will be done. Yeah. So what will happen? So it will basically the principle is same as first come first serve. Okay. फर्स्ट सम फर्स्ट का मतलब जो पहला प्रोसेस आया है हम उसको पहले असाइन करेंगे बट स्लाइट डिफरेंस इज नाउ द प्रोसेस विल बी एलोकेटेड मैक्सिमम with the time complexity or time quantum. Okay, whatever the time quantum is assigned, maximum that much is assigned. So in this case, पहले हम P1 को assign करेंगे. तो जब हम P1 को assign किए, तो maximum कितना time चाहिए उसको? Maximum time चाहिए उसको 24 मिलीसेकेंड. लेकिन कितना असाइन कर सकते हैं? आगे मैक्सिमम असाइन 4 सेकेंड असाइन कर सकते हैं. ठीक है, अगर 4 हो गया तो कितना बचेगा इसके पास? 20 बचेगा. नेक्स्ट इसको असाइन करेंगे. नेक्स्ट आई विल असाइन P2. कितना असाइन कर सकते हैं? मैक्सिमम 4 कर सकते हैं. लेकिन P2 कितना चाहिए? P2 को 3 ही चाहिए. तो आई विल असाइन ओनली 3 यूनिट, नॉट 4. ओके, सो इट विल बी 7. नाउ नेक्स्ट अगेन P3. मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 4 यूनिट. बट P2 कितना चाहिए? 3 यूनिट ही चाहिए. हम लोग कितना करेंगे? 3 यूनिट. नेक्स्ट फिर से कौन आएगा? P1. कितना कर सकते हैं मैक्सिमम? 4 यूनिट, विच विल बी 40. 20 में से 4 गया, इट विल बी रिमेनिंग 16. अगेन P1 कितना करेंगे मैक्सिमम? 18. Okay, why P1? Because no more process is available. P2 is completed, P3 is completed. Only P1 ही है ना, इसलिए P1 ही बार-बार आएगा क्योंकि P2 and P3 already completed. Now again फिर किसको करेंगे? Again P1 को करेंगे. Okay, how many times? 1, 2, 3, 4. Now again 22. Fine. How many amount of time it will require? 4 बार हो गया ना, 1, 2, 3, 4 मतलब 1, 2, 12. Only also 8 is required. That means again P1 26. Now it will be 4. Now again P1 that will be 30. Fine. Or I can write this as like this. That means पहले P1 0 से 4. Then after P2. Okay, 7 तक. Then after P3. How much? 10. Then rest of is all P1. 10 से लेके आपको कहाँ दिखता? 30 तक P1. Fine. Now suppose I count the waiting time of P1. So waiting time of P1 will be upper यहाँ से यहाँ तक 0 है. लेकिन फिर P1 यहाँ से वेटिंग करना स्टार्ट किया. कहाँ तक वेट किया है? 10 तक. So it will be 10 minus 4, which will be 6. Now waiting time of P2. Okay. कहाँ से वेटिंग करना स्टार्ट किया? P2 0 से वेटिंग करना स्टार्ट किया है. कहाँ तक वेट किया है? 4 तक. 4 minus 0, this will be 4. Now waiting time of P3, this will be how much? 7 तक वेट किया. कहाँ से? 0 से. तो इसे 7 minus 0, this will be 7. So what is the average waiting time? Now average waiting time will be 13 plus 4. How much average waiting time? Yes, 17 by 3. which will be how much? 5.66. 5.66. Fine. Now similarly you can find the turnaround time also. So turnaround time of P1 will be how much? Waiting time plus burst time. Burst time is 24. So it will be 30. Similarly, average turnaround time of P2 will be waiting time is 4. Burst time is 3, which will be 3. Now P3 it is
how much waiting average waiting time? 7 plus 3, which will be 10. Now how much? Now it is 30 plus 40, 43. So 4 plus 3 That's is 7. 7. Yes. Okay, 4 plus 3 is 7. So it will be 47. Fine. So average turnaround time will be how much? Now it is 47 15.66. by 3, which will be 50.66. Okay, so this is the basic concept of what? Round robin. Fine. Note down if you want to note down this problem. Just note down. So any doubt, for anyone having any doubt regarding this round robin, how we are doing? No, sir. Okay. No, sir. So copy it, लिख लिया, example लिख लिया. Yes, sir. और मोस्ट ऑफ द सिस्टम में आजकल जो है ना हम लोग यही एल्गोरिथम यूज करते हैं क्योंकि एसजेएफ या फिर एसआरजेएफ. ठीक है. No doubt these two are best, okay? These two are best, but it is very difficult to implement because हम लोग किसी भी process का how much time it is required or how much time it will required to finish, we cannot predict it, okay? Predict करना बहुत ही मुश्किल है किसी भी process का कितना time उसको चाहिए या फिर कितना time उसका remaining है. तो इसके कारण से हम लोग इसको implement नहीं कर पाते हैं. तो obviously we go for the round robin. क्योंकि राउंड रॉबिन में क्या होता है आपका मल्टी शेयरिंग परफॉर्म करता है. ठीक है. मल्टीटास्किंग जो पढ़े थे हम लोग ना, मल्टीटास्किंग जो पढ़े थे टाइप ऑफ सिस्टम. तो मल्टीटास्किंग ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ राउंड रॉबिन बिकॉज यहाँ पर आपको हर एक प्रोसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है. ठीक है. तो सो दैट दिस प्रोसेस विल गिव द सीपीयू exactly equal amount of time so that we can implement the concept of multitasking with the help of this round robin algorithm. Okay, then let us see the implementation part. Okay, so again first, yes. So first let me discuss the algorithm. Okay. So it is over. All of you copied. लिख लिए सब लोग. पिटा दे इसको. Yes, sir. Okay. Get this. Today we finish this topic. Okay. From tomorrow onwards we have a class, so we will start with a new topic, which is called dead clock. Okay. So don't इसलिए कोई छोड़ के मत जाना. हम दो और algorithm पढ़ेंगे जो important है आपके क्लास के. Okay, so quickly just explain me the algorithm. Same, we will start the process. Now we will accept the, first of all we accept the process in a ready queue. Okay, user will put the number of process in ready queue and the time quantum. Okay, so हम लोग एक ready queue में process को enter करेंगे. Along with that हम लोग time quantum भी यहाँ देना है. Now for each process in a ready queue, जो भी process हम लोग ready queue में, we will assign a process ID. Okay, and accept the CPU time for the first time. Fine. These are the input. So these are the input that we have to provide. Fine. So what are the input? Now you have to provide the process ID. First you have to provide n में क्या करना है? Number of process. Okay, number of process. Suppose it is 5. Then what you have to do? Now you have to take a time quantum, a variable time quantum here. Suppose x is my time quantum. Then you have to enter the CPU time or burst time. So I will take an array for the entering the burst time. Along with that, I will take a PT for the process ID. Fine. Then I will calculate the number of time slice for each process where
number of time slice of this process is given by burst time by time slices. What do you mean by this one? What do you mean by this one? Number of time slices by process. That means कितने बार, okay, कितने process को how much amount of time the process will get the chance. Suppose I say process P1 is having a first time of 24 millisecond. Previous example में. Now हम लोग का टाइम क्वांटम क्या था? टाइम क्वांटम जो था कितना था? 4 मिलीसेकंड था. Okay. Now what will be the number of time slice? Number of time slice given as it will be 24 your burst time divided by time slice, which will be 8. That means 8, no? Fine. Or 6, sorry. It will be 6. So 6. That means P1 will be assigned 6 times, or time slice of P1 will be assigned 6 times. So you have to calculate the time slice first. Okay. So once you calculate time slice, then what we are doing, if the burst time is less than the time slice, then number of time slice should be -1. So which अब क्या बोल रहे हैं, हम लोग ने देखा था अगर हम लोग का जो burst time है वो time slice से छोटा होगा, then क्या करना है आपको, then the time slice of the number will be equal to 1. Okay, the same case हम लोग P2 का देख लेते हैं. P2 का हम लोग का burst time क्या था? burst time था 3, जो कि टाइम साइज से छोटा है. अगर उसका टाइम क्वांटम से छोटा है, अगर टाइम क्वांटम से छोटा होगा तो हम लोग का टाइम स्लाइस क्या हो जाएगा? टाइम स्लाइस ऑब्वियसली 1. Okay, now you have to initialize this one. Find this 2 is extra initialization step to find the time slice. Fine. Now important thing, now you have to consider the queue as a circular queue. As I already said, round robin will be act as your circular queue. Now what I will do, now the ready queue जो है आपका वो एक circular queue है, क्योंकि हम लोग को रोटेशन करना है अभी between the process, है कि नहीं? Okay, so it will be a circular queue. Now while assuming the circular queue, what you have to do, now you have to calculate the waiting time. Okay, so waiting time of process n क्या है? Waiting time of process n minus 1 plus burst time of process n minus 1 plus the time difference of getting the CPU from the process n minus 1. So here the formula is different in the compared to the previous case. हम लोग का यहाँ पर जो waiting time का जो formula है वो अलग है. ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, वेटिंग टाइम फॉर एनी प्रोसेस निकालना है आई, तो क्या था हम लोग का सिंपल था, वेटिंग टाइम ऑफ आई -1 करते थे प्लस बर्स्ट टाइम ऑफ आई -1 करते थे. लेकिन यहाँ पर अगर वेटिंग टाइम निकालना है तो आपको क्या है, ये तो होगा ही होगा, प्लस आपको क्या करना है, द टाइम डिफरेंस इन गेटिंग द सीपीयू फ्रॉम द प्रोसेस n-1. दैट मींस कितने टाइम तक वो वेट किया उसका नेक्स्ट टर्न आने के लिए. Okay, this is the time difference of getting the process n-1. Fine. Similar turnaround time formula will be waiting time of process and burst time of process and the time difference in getting a CPU for the process n. Fine. So once you calculate the waiting time and average, turnaround time, so we calculate the average waiting time, average turnaround time. Fine. This is the algorithm part. Okay, this is the algorithm part where you take additional thing. First thing का additional thing यहाँ पर पहला चीज आपको याद रखना है, टाइम स्लाइसिंग निकालना है. ठीक है, टाइम स्लाइसिंग नथिंग बट बर्स्ट टाइम बाय योर टाइम क्वांटम. सेकंड थिंग, नेक्स्ट थिंग क्या है, इफ द बर्स्ट टाइम इज लेस देन टाइम क्वांटम, then time slice will be 1. Third thing, the queue which you will take, that will be a circular queue. Okay, that will be a circular queue. Like the question between 51, Fine. which has a burst first. Then what we have to do now, waiting Is the time. process execute first? Yes, now waiting time and turnaround time are different here. Clear? So now let me implement this algorithm. Let me write the algorithm first. Okay, so if you want, you can write the algorithm. Okay, if you want, you can write the algorithm. Algorithm लिख सकते हो. So let me meanwhile open the program.
Okay, just write out the algorithm. सर हाँ बोलिए। सर सारा एल्गोरिदम सब एलएमएस में अपलोड किया हुआ है क्या? LMS में नहीं अपलोड किया होगा, algorithm LMS में सर upload- अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, हम कोड से सेव कर देंगे, तो LMS में अपलोड कर देंगे। ठीक है। Okay, so let's try to implement this program. So let me take it through. Okay, so let me explain one by one. So what does this mean? So same preprocessor, main function. Now what are these? These are the declaration part. Okay, these are the declaration part. Okay, fine. So what we are declared now, I am declaring the three variables I, J, and then they are ready for the burst time, waiting time, turnaround time, completion time. Okay, then they are average waiting time, average turnaround time, and a temporary one. Okay, now we'll take input. Now this is step number 1. What we are doing now, I am taking number of process. ठीक है, enter the number of process. ठीक है, now हम लोगों ने n equal to जो भी है उसमें suppose n number 5, तो n में क्या आएगा, number of process equal to 5. और this part from यहाँ से लेकर आपका, और this will be the first time we are calculating. Fine. Now what we are, once you have number of process, now you have to enter the your process ID and the your burst time. Okay. Once you have assigned the number of process, आपको क्या करना है, process ID और burst time assign करना है. Now so for that we are, हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक for loop लिए है, अगर 5 process है तो 5 process का हो. Suppose this is my process ID के लिए, ठीक है, मेरा process suppose P1 और P0 से start करके P0, this will be P1, this will be P2, this will be P3 and this will be P4. So along with that आपको एक और क्या रहेगा, array रहेगा burst time will be stored here. Okay, now 5 process का burst time, suppose this fine, मतलब आपने इंटरवल, उसके बाद क्या करना था आपको, now you have to calculate the time slicing, है कि नहीं. Now you have to calculate the time slicing, or what you have to do now, actually we have entered the time slicing. Now this step is calculating your time slicing. So whatever time quantum is given, or I can say size of the time quantum, the time quantum is stored in a variable. Suppose it is 4. Okay, variable t में store होगा. Okay, now I'm taking अभी क्या करना है, now I'm taking a variable called max में initialize कर रहे हैं. Now suppose I'm assuming that only one process is there, then max में क्या होगा, burst time of पहला process. ठीक है, अगर पहला एक ही प्रोसेस है तो उसका मैक्सिमम टाइम क्या होगा, दैट मैक्सिमम टाइम विल बी दैट प्रोसेस ओनली. Okay, because there is no more process, whatever the process we are having, that process is going to assign to the max. Okay, if there is a more than one process, so what you have to do now, you have to check for this one. Okay, so what we are doing here, what I am doing, for every process I am checking if max is less than P of burst time of u. So if it is less than 2, what we are doing, maximum equal to this much. So basically हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, now I'm identifying the maximum burst time for a process. Okay, what max is storing, max में क्या कर रहा है, max आपका जिस process का burst time सबसे ज़्यादा है या फिर सबसे maximum है, उसको वो store कर रहा है. Fine.
उसको वो स्टोर कर रहा है, इसका सबसे ज्यादा बर्स्ट टाइम है. फाइन. नाउ then we have to calculate. Now we are taking two loop here. One is for two nesting loop here यहाँ पर. Okay. Now what we are actually doing here, now we are calculating here turn around time for a particular process based on the max. Okay. Turn around time for a particular process. Similarly, we are calculating here waiting time for a process. Okay. This loop is used for the calculating the waiting time, and this loop is used for the turnaround. This is used for the turnaround time, and this is used for the waiting time. Okay, so once it is done, once this part is done, now we will calculate the. So we will go for the average waiting time and average turnaround time. Okay, so let me first execute this program. So whether we are getting the output or not, let me check. Then I will save this code so you can. So let me save this program. Will fine. So let me compile. Okay. Now you can see they are asking enter the number of process. So let me implement what we have solved right now. The number of process is 3. So it's asking enter the burst time of first process. So let me write is 24. Enter the burst time of second process. So it is 3. Enter the burst time of third process, which is 3. So it's asking enter the size of the time slice. So let me write it as a 4. Yeah. Now you can see, so what we are getting. So we are getting the average waiting time and average turnaround time, which is, so average waiting time is 5.66, and for the average turnaround time we are getting, now average turnaround time is 15.66. Okay, so is it correct? If we are getting what we have, the answer is correct. Yes, sir. Okay, now you can see the average waiting time, which is your 5.66, and the average turnaround time, which is your 15.66. Thus, we have calculated. Okay, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग आ रहा है, ये क्यों ऐसे आ रहा है? वेटिंग टाइम में प्रोसेस P1 कितना आया था हम लोग का? 6 ही था वेटिंग 6 ही था, सर. Yes, sir. 6 था, इसका क्या था 4, इसका क्या था 7. टर्नअराउंड टाइम भी सेम है, Yes, sir. ये भी सेम है. ओके, इससे पहले एक और क्लास में कराए थे ना क्वेश्चन पिछले बार, उसको बताओ एक बार आउटपुट. लेट मी चेक. डू एनीवन हैविंग दैट किसी के पास वो क्वेश्चन है, जस्ट मुझे बताना इनपुट क्या था. चेक करते हैं जो पिछले बार क्लास में कराया था. So let me compile once again. Take some time. Yes, number of process कितने थे? 4. Okay. Then what is the burst time of first process? 53. 53. 53. Yes, sir. Okay. Second process 17. 17. Next process 68. 68. Okay. 24. And time slice 20. 20. What the answer? Average क्या था? Average waiting time कितना आया था? Average waiting time 73, sir. 73 आया था, और average turnaround time 113.5. 130.5. Let us 113, sir. 13.13. Okay. ठीक है, देखते हैं. So yes,
we are getting the answer, which is the 73 the average waiting time and average turnaround time is 113. Fine. So what is the benefit of writing the program? What is the benefit? तो क्या एडवांटेज है लिखने से? तो आपका यहाँ पर जो मैनुअली कंप्यूटेशन कर रहे थे हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं. हम अभी का अब सपोज अब देंगे अभी 100 प्रोसेस है. नाउ सपोज 100 प्रोसेस दिए हैं और अगर 100 प्रोसेस का अगर आप कैलकुलेट करोगे, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, बट अगर हम लोग प्रोग्राम के थ्रू करेंगे नाउ इजियर. नाउ इफ यू राइट 100 प्रोसेस, नाउ इट विल बी कैलकुलेट विद इन सम मिली सेकेंड. बट अगर मैनुअली करेंगे इट विल बी वेरी मच हार्डर. फाइन. So now you have to implement this program. Okay, so we are having 8 minutes left. Okay, 8 मिनट हम लोग के पास है इस सेशन का. तो आप लोग को ये प्रोग्राम लिख के लास्ट टाइम जैसे हुआ था ना, then after 8 minutes you have to share your screen. Fine, you have to implement and share your screen. ठीक है, मुझे लिख के आपको दिखाना है. तो ये मैं कोड अभी आपको कोड शेयर में शेयर कर रहा हूँ. फाइन, आई एम शेयरिंग दिस कोड इन अ कोड शेयर. Okay, so let me share the link of the code share in the group. Fine, अभी मैंने शेयर किया है कोड. So you have to implement and show me the output. Okay, let me share the attendance also. सबको मिला कोड? Everyone can access the code? Yes? Yes or no? Yeah, just implement the program and show me the result for different data set. Okay, different process, at least for 5 process. Now let me frame a question to solve this question. Answer मुझे बताना. Solve. Can everyone can see this question number 7? Question number 7. सबको दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में ये वाला बिट 12 नंबर बिट करके बताओ क्या आएगा आंसर. The mean process turnaround time. You have to calculate the average turnaround time. Assume the time slice is 1. Yes, जिसका होगा बताना मुझे. मैं I will allow to share the screen. Okay.
Yes, anyone with the answer? Anyone with the answer? Yes. Where is Rehan today? Rehan, are you present? Rehan is there. Rehan. कोड नहीं आ रहा सर, कोड शेयर में। नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? लिंक जो ओपन पता कियो, नहीं। जो लिंक सर मुझको शो नहीं हो रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा है सर। ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, कोई शायद एडिट, आप लोग को एडिट मत करना, अगर आप लोग एडिट करोगे तो फिर वहाँ से डिलीट हो जाएगा सर ना, तो बस आप लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट करना, नहीं तो ब्लैंक दिखाएगा। नाउ इट विजिबल, अभी दिख रहा है? कोड सेल में चेक करो अभी। यस सर। हाँ, आप उसको कट पेस्ट मत करना कोई, तो फिर कल कॉपी पेस्ट करना, और ये 24 आवर्स तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। Okay, show me the screen. Some if anyone implemented, किसी ने implement किया तो दिखाओ. And what is the answer for this question? Implement the answer for this question. So here arrival time is different. ये solve नहीं होगा. Arrival time is different, no? Don't try this one. Okay, question number 6. So here also arrival time is different. Then go for this one. Try the first question. Okay, first question. Try the first question. Try to solve the first question.